Welcome student to Chem Gyan, lecture number 14, and the chapter we are doing is solutions. Now today we are studying colligative property. Colligative property. Now what is colligative property? Student, it's very important part of the chapter. Let's understand and understand well. Colligative property is that property of any substance which depends upon number of particles present in the solution. Right? Now understand, this property depends upon number of particle present in the solution. Colligative property is that property which depends upon number of particles present in the solution. वो number of particles पे depend करता है. और ऐसे when I say particle, right, it can be in numbers, number of molecule, atom, ions, or it can be in mole, right? So when I say particle, it can be in numbers, it can be in moles, whatsoever, right? So number of particles present in the solution and does not depend on nature of substance. नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता. नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता मतलब वो सब्सटेंस आई मीन इट्स स्वीट, इट्स सार, कैसा भी है उससे इफेक्ट नहीं पड़ता. नेचर पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दिस, राइट? फॉर टाइम बिंग जस्ट लिसन द डेफिनेशन. So does not depends upon the nature of substance or size of a substance. Size और nature पे depend नहीं करता, वो सिर्फ किस पे depend करता है? Number of particles पे depend करता है. कितने particles present है उस पे depend करता है. Right student? And now, so which are that colligative property? Right? वो कौन सी properties हैं जो number of particles पे depend करता है? ठीक है? Which are the colligative properties which depends on number of particles? ऐसे 4 colligative properties है which we are covering in our syllabus, right? How many? 4 colligative properties. Which are they? Let's understand. First colligative property is relative lowering of vapor pressure. आज इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इन शॉर्ट आई विल राइट RLVP, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. दिस द सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. थर्ड वन, depression in freezing point. And fourth colligative property, osmotic pressure. Right, these are the 4 colligative properties. सबसे पहले तो हम समझते हैं कि colligative properties नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे कैसे डिपेंड करता है और कैसे वो नेचर पे डिपेंड नहीं करता या साइज पे डिपेंड नहीं करता. लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. ओके, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, सपोज I take a vessel. In this vessel I take some amount of water. What I take? Some amount of water. पानी लिया मैंने, right? Now obviously this liquid will convert into vapors, right? We know that. Okay,
But if I ask you, what will be the boiling point of this solution? What will be the boiling point? अब boiling point में क्या होता है? सारे liquid vapors बन जाते हैं, ठीक है? So what will be the boiling point of liquid? Everybody knows what is the boiling point of a liquid. कितना है boiling point of a liquid? That is water, 100 degree Celsius. I'm talking about water, understand student? I'm talking about water. तो water का boiling point कितना है? 100 degree Celsius, right ना? Okay, now understand. If I add some solute in this is solvent, I represent as B, and I add some amount of solute, that is B, right? But condition क्या है? पहला condition ये है कि ये जो solute हमने add किया, that should be non-volatile. ये solute non-volatile होना चाहिए, पहला condition. दूसरा, ये solute non-electrolyte भी होना चाहिए. Non-electrolyte. What is non-electrolyte and non-volatile, student? Non-volatile तो आपको पता ही होगा, right? उसको ऐड अगर मैंने किया, सपोज बी ऐड किया, राइट, बी के वेपर्स नहीं बनने चाहिए, राइट? तो अगर बी के वेपर्स नहीं बन रहे हैं तो वो क्या है? नॉन वोलेटाइल है. तो यहाँ जो ये वेपर्स मैंने बनाए वो सिर्फ किसके होंगे? ए के होंगे, राइट? गॉट दैट? सो ये नॉन वोलेटाइल. नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब इट शुड नॉट फॉर्म कंडक्टिंग सोल्यूशन. ये आयंस बनने नहीं चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है? ये कंडीशन है. अच्छा, अंडरस्टैंड स्टूडेंट? Now, when I add this solute, right? So this becomes solution now. अब पहले से A था, अब उसके अंदर B आ गया, अब ये बन गया solution. Pure water का boiling point कितना था? 100 degree Celsius. मैंने solute add किया, अब बन गया solution, right ना? अब ये solution का boiling point क्या होगा? What is the boiling point of this solution? Is it 100? No, student. It will not be 100. It will increase. Boiling point increases when we add solute. Solution का boiling point pure solvent से कभी भी ज़्यादा होता है. अच्छा, let's say जो boiling point of solution है water का, we know 100 है, right ना? अब solvent का, pure water का 100 है. अब मैंने अगर जो solute डालने का जो solution बना उसका boiling point निकाला. Suppose that boiling point is 102. How much? 102. Now, can you tell me how much there is a elevation? Boiling point में कितना elevation हुआ, कितना increase हुआ, कितना rise हुआ, कितना बढ़ा? तो हम easily find कर सकते हैं. 102 minus 100, obviously 2 से बढ़ा. I hope you got that. So elevation कितना हुआ? 2 का हुआ. Okay, now understand. अब मैं क्या करता हूँ? Suppose initially मैंने इसमें 100 molecule डाला था, right? तो 100 में बॉइलिंग पॉइंट हो गया 102, तो 2 का राइज हुआ. अब मैं अब मैं अलग फिर से करता हूँ. आई टेक अ प्योर वाटर अगेन, राइट, बट नाउ इंस्टेड ऑफ 100 आई ऐड 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्यूट, राइट? मैंने कितना डाला? 200 मॉलिक्यूल डाला, राइट? सो अब जो एलिवेशन होगा, ठीक है, वो क्या होगा? सपोज हो गया 104. कितना हो गया? 104, राइट? सो अभी कितने से एलिवेट हुआ, राइट? पहले 100 था, मैंने 200 मॉलिक्यूल्स डाला, 104 हो गया, तो ऑब्वियसली एलिवेशन हुआ 4 का. इंक्रीज कितने हुआ? 4 का. मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा, राइट? आर यू गेटिंग दैट? क्लियर स्टूडेंट? ओके, सो इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन दैट, जितना सल्यूट अंदर बढ़ेगा सोल्यूशन में उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा. दैट मीन्स ये जो एलिवेशन हो रहा है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है. दैट्स व्हाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. गॉट दैट? ठीक है, ये हमको समझ में गया क्यों नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है. दूसरा हमको समझना है कि हाउ इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर. नेचर पे कैसे डिपेंड नहीं करता, ये भी बात समझनी है, ठीक है? तो लेट्स सी, let's understand. Suppose again I explain this. First time मैंने वाटर लिया और अज्यूम करो मैंने उसके अंदर 100 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के डाले थे, राइट? किसके? ग्लूकोज के. दिस टाइम 100 मॉलिक्यूल आई एम नॉट एडिंग ऑफ ग्लूकोज बट इंस्टेड आई एम एडिंग ऑफ यूरिया. मैंने वाटर लिया, this is water,
और उसमें मैंने अब पहले 100 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज डाला था, अब मैं 100 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया डालता हूँ, राइट ना? ओके, नाउ ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? 100 मॉलिक्यूल डालने पहले जब मैंने ग्लूकोज डाला था, अज्यूम करो, तो वो टाइम पे कितना इंक्रीज हुआ था, राइट? 102 हुआ था। अब मैंने यूरिया डाला, फिर से राइज कितना होगा, 102 ही होगा। आप ग्लूकोज ऐड कर रहे हो, आप यूरिया ऐड कर रहे हो, आप सुक्रोज ऐड कर रहे हो, आप क्या ऐड कर रहे हो इस पे डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ डिपेंड करता है कितने पार्टिकल्स आपने ऐड किए। अगर मैंने 100 पार्टिकल्स ऐड किए तो फिर से कितना हो गया, 102। अगर मैंने 200 ऐड किया फिर कितना होगा, 104। राइज कितना हुआ, पहले केस में राइज हुआ 2, दूसरे केस में राइज होगा 4, सो ऑन सो फोर्थ। सो व्हाट यू आर एडिंग वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता, आप कितना ऐड कर रहे हो ये इंपॉर्टेंस रखता है। और जो चीज इस पे डिपेंड करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट, राइट? समझ में आया? एंड सिमिलरली विल बी स्टडिंग ऑल दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो वो टाइम पे आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दैट. फॉर टाइम being I have taken only elevation in boiling point, so to make you understand how colligative property depends upon number of particles, how it does not depends upon nature or size, right? Size 100, suppose 100 size को भी समझ लेते हैं। मैंने 100 मॉलिक्यूल छोटा डाला या मैंने 100 मॉलिक्यूल बड़ा डाला, राइट? साइज अगर इंक्रीज होती है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट स्टूडेंट? okay now today we'll be studying first colligative property, that is lowering of vapor pressure, right? So the first colligative property, lowering of vapor pressure. In short, I'll be writing R, lowering of RLVP, relative, it's not a lowering of vapor pressure, but it has to be relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure. In some book they have mentioned lowering of vapor pressure, right? But actually colligative property is relative lowering of vapor pressure. Okay student, right? Now student, in a previous lecture I have explained this to you all, right? When I taught you Raoult's law, at that time this was explained, but today again I'll be explaining it, right? Let's understand. First of all, we have to understand, but today we'll understand in depth, in great depth, right? Now first we have to understand what is vapor pressure, student. What is vapor pressure? We have to understand this first. Okay, let's see. Suppose I take a vessel. In this I take water. The simplest example of solvent is water. तो मैंने इसके अंदर water ले लिया, right? Okay. Now, obviously, the vapors will be collected over here, right? Liquid will convert into vapor, process called vaporization, right? ये जो vapors form होगा, ये vapors randomly यहाँ वहाँ move करेगा, और जब वो move करेगा तो वो हर एक जगह टकराएगा. It will collide on the walls and same time it will also collide on the surface of a liquid. वो अपने ही liquid के ऊपर pressure डालेगा, right? So ये जो pressure exert करेगा on the surface of a liquid, ये लिक्विड का ही वेपर्स लिक्विड के ही सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, राइट? वो जो प्रेशर है उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. अंडरस्टूड, राइट? बट व्हेन टू फाइंड दिस वेपर प्रेशर? ऑब्वियसली वेपर प्रेशर हम फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट लाइक बैरोमीटर, मोनोमीटर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? बट द क्वेश्चन इज व्हेन टू फाइंड दिस. But we have to find this when there's a equilibrium, right? We have to find this at equilibrium, right? So how I define vapor pressure? Again, listen. The pressure exerted by the vapors of a liquid where on a surface of a liquid. When we have to find at equilibrium.
This is what we called as vapor pressure, right? Now student, this is pure water, right? The vapor pressure of pure water is denoted as P naught A. Okay, we write what? P naught A, right? Whenever it is pure solvent, we write this naught. Clear? So vapor pressure of pure solvent is always denoted by letter what? P naught A. Okay, understood. Now suppose in this I add some solute. Acha, water, I represent it as A. How I represent? Water as A, right? So here all A is present, only A is present, right? Now what I do, I introduce some solute in this. What is that solute? Solute I represent as B, right? And condition is, right, for time being, condition is this is non-volatiles, right? In Rahul's law we have studied volatile and non-volatile both, right? But here I assume it is non-volatile. So B will also be present over here, but the vapors will only of A, right now, because B is non-volatile. Understood? Now student, after adding the solute, okay, the vapors is of initially, right, when B was not added, vapors किसका था? सिर्फ A का ही था, right? Pure A था, right? अब B मैंने ऐड किया, जब B मैं ऐड करता हूं तो लिक्विड में B आ गया, बट ये B वेपर्स में नहीं आएंगे, मतलब अभी भी वेपर्स सिर्फ किसके हैं? A के हैं, राइट? बट दिस वेपर एंड दिस वेपर प्रेशर नाउ ऑफ अ सॉल्यूशन, अब ये सॉल्यूशन बन गया, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर होगा PA, राइट? एंड अंडरस्टैंड दिस PA नॉट A एंड PA, ओके, इनमें फर्क क्या है? इसमें ये फर्क है कि पहले जो वेपर्स था वो ज्यादा होगा, सॉल्यूट ऐड करने के बाद वेपर्स कम हो जाएंगे. क्यों कम हो जाएंगे? रीजन कि बिकॉज व्हेन यू एडेड बी, सम बी मॉलिक्यूल विल प्रेजेंट द सरफेस. कुछ बी सरफेस पे भी तो आ जाएंगे, हर जगह होंगे, बट कुछ सरफेस पे भी होंगे. तो अगर वो सरफेस पे है तो ये उतना ज्यादा इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, तो इसके वेपर्स भी कम हो जाएंगे. अगर एक के वेपर सरफेस पे कम है तो ऑब्वियसली इसका जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो भी कम होगा, राइट स्टूडेंट? सो द प्रेशर एक्सर्टेड विल आल्सो बी लेस, राइट? सो व्हाट आई कैन से फ्रॉम दिस, कौन सा ज्यादा है, ये कौन सा वैल्यू बड़ी होगी, किसकी वैल्यू छोटी होगी? थिंक एंड टेल मी विच विल बी बिगर, विच विल बी स्मॉलर. ऑब्वियसली PA वैल्यू छोटा होगा और P नॉट A का वैल्यू बड़ा होगा, right? Got that? Okay, now my question is what is the difference between them? कितना डिफरेंस आया पहले जो था और उसका जो बाद में हुआ सॉल्यूट ऐड करने के बाद में जो वेपर प्रेशर, उसमें डिफरेंस बताओ. सो हाउ यू गोइंग टू फाइंड दैट? ऑब्वियसली यू नो P नॉट A, ये वैल्यू बड़ी है, उसके बाद PA की वैल्यू आई, राइट? अगर मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, राइट, आई कैन राइट डेल्टा P ऑल्सो, राइट? तो इस टर्म को मैं बोलूंगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टर्म. दिस और दिस is what we call lowering of vapor pressure. Got that, student? Clear? Okay, so we understood what is lowering of vapor pressure, right? Now okay, so now we have to understand what is relative lowering of vapor pressure. Okay, we understood what is lowering of vapor pressure. Now we have to understand what is relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure, right? Now student, we have already studied what is Raoult's law, if you remember, right? If you remember, हमने एक
टोटल प्रेशर फाइंड करने के बोला था, राइट, और उसके लिए हमने लिया था PA और PB, राइट. PA is partial pressure of A and PB is partial pressure of B, राइट. जैसे मैंने लास्ट में एग्जांपल लिया, उसमें मैंने सल्यूट ऐड किया B, राइट, बट दैट B इज नॉन वोलेटाइल, मतलब PB विल बी व्हाट, जीरो. उनका कोई पार्शियल प्रेशर तो होगा नहीं बिकॉज वेपर्स प्रेजेंट ही नहीं. तो इफ इट इज जीरो आई कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, PT is equal to PA. Now PT is total, right student? Okay, what is PA? Raoult's law mein we have already studied. PA is what? P naught A and multiply by mole fraction of A. We have studied this, student, right? Okay, अब मैं यहाँ substitute कर दूँ. So P is equal to P naught A XA. Remember, this is Raoult's law. And since we are talking only of A, instead of PT, I can write what? PA. Right? See, सिर्फ सॉल्वेंट ही प्रेजेंट है, तो टोटल में भी तो सिर्फ सॉल्वेंट ही तो होगा. तो आप अगर यहाँ T भी लिखते हो तो भी चलेगा, PA लिखते हो तो भी चलेगा, और इफ ऑल राइट इन द टर्म्स ऑफ B तो मैं B भी लिख सकता हूँ. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, रिमेंबर स्टूडेंट, ठीक है. या PS भी लिखते हो, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो भी चलेगा. तो इंस्टेड ऑफ PT आई कैन राइट PS ऑल्सो, और आई कैन राइट PA ऑल्सो, or PT or PB whatsoever, right? But this is what we have studied, Raoult's law. ये भी हमने पढ़ा है Raoult's law में, ये भी हमने पढ़ा है. ये Raoult's law है, ये भी Raoult's law है. फर्क क्या है, यहाँ जब सल्यूट हम ऐड करते हैं वो सल्यूट कैसा होना चाहिए, वो सल्यूट होना चाहिए नॉन वोलेटाइल, राइट. और ये कब यूज करते हैं, जब सल्यूट होता है वोलेटाइल, राइट. क्लियर? ओके स्टूडेंट, नाउ what we are studying, we are studying relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure. Okay, let's see. PA, इस टर्म को मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ. So PA will be P naught A is equal to XA, right? What is XA? This is mole fraction of what, student? Mole fraction of solvent. A stands for solvent, right? Acha, we also know XA plus XB is equal to 1. So what will be XB, student? It will be 1 minus XA, right? तो suppose मुझे B के फॉर्म में अगर लिखना है तो मुझे 1 में से ये वैल्यू सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी, like this, right? But since I have subtracted this value from 1, here also I have to do the same thing, right? Maths says like that. Okay, so यहाँ भी मैं 1 minus PA upon P naught A लिख सकता हूँ, right student? Now let's cross multiply. P naught A minus PA upon P naught A, right? This is going to be equal to XB. Clear? Now student, let's see. This is what is the formula which we are to derive. And understand, what is this P naught A, student? P naught A क्या है? बोलो. P naught A is what? Vapor pressure of pure solvent, right? Okay, PA is vapor pressure of solution, vapor pressure of solution. What is this difference called? P naught A minus PA. ये term क्या बोलता है? This is lowering of vapor pressure. ये जो है, this is called lowering of vapor pressure, right? And this whole term, student, this whole term, right, that is P naught A minus PA upon P naught A. This is what we call relative lowering of vapor pressure. इस पूरे term को हम बोलते हैं relative lowering of vapor pressure. And very important, this relative lowering of vapor pressure is equal to what?
इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट. मतलब इन शॉर्ट अगर आपको एक मोल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड करना है एंड यू नो द मोल्स ऑफ ए एंड बी, right? So just find xb, that will be equal to relative lowering of vapor pressure, right? Clear? Okay, now moving further. Okay, now student, we have studied this. Let's derive it further. Okay, how? Let's see. P naught A minus PA upon P naught A. XB, that is mole fraction of solute, can be written as NB upon NA plus NB, right? Can I write like this? Okay, now student, if your solution is very दिल, ये दिल नहीं है, ये डाइल्यूट है. ओके, इफ योर सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, राइट, व्हाट डज इट मीन? उसका ये मतलब होता है कि सॉल्यूट बहुत कम प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू ऑफ सॉल्वेंट, राइट? मीन्स आई कैन से द एनबी वैल्यू, बिकॉज ये एनबी क्या बोलता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट बहुत कम प्रेजेंट है, right now. So this MB from the denominator can be neglected. Now question ऐसा भी आ सकता है, सर आप ये neglect कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, right? Because student, इसको अगर हमने neglect किया तो whole term zero हो जाएगा. और वैसे भी यहाँ मैं इसलिए neglect कर पा रहा हूँ क्योंकि ये addition है, ये वैल्यू बहुत बड़ी है और ये वैल्यू बहुत छोटी है. For example, this value is suppose 1 lakh and this value is 1. So if NB is 1, I divide 1 by 1 lakh, or if I divide 1 by 1 lakh and 1, your answer is not going to make any difference, right? So I'm neglecting this to make it simple without altering the answers, right? So here NB can be neglected, but only when the solution is very dilute, that is solute present in very less amount. So let's neglect and rewrite. P naught A minus PA upon P naught A is equal to NB upon NA, right? Okay, now what is NB, student? Here I write. What is NB? NB is number of moles of solute. Can also be written as weight of solute upon molecular weight of solute. ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है. Similarly, I can write what is Na, weight of solvent upon molar mass of solvent, right? अब मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा. ओके, लेट्स सी. P naught A minus PA upon P naught A is equal to NB की जगह लिख रहा हूँ weight of solute, molecular weight of solute, right? Here number of moles, that is weight of solvent upon, this will come over here, molecular weight of solvent, right? This is the formula. It's the same thing, either you write in this term or you write in this term. Clear? Now normally numericals comes on this. Okay, किसी में भी आ सकता है, but normally इसमें आता है. And normally they ask you molecular weight of solute. What is this molecular weight of solute? So they will give you PA, P naught A values, weight of solute देंगे, weight of solvent देंगे, solute और solvent बताएंगे, and they will ask you what is the molecular weight of solute. तो ये आपका numericals में question आता है. Got that? ठीक है? We'll be solving numericals, right? But before that, let's understand the formula very well. Okay, understood? Okay, but suppose they give you molecular weight, they can ask you weight of solute. See, ये जितने भी हैं weight suppose MB दिया तो ये weight भी पूछ सकता है. Weight दिया, they can ask you weight of solvent. I mean, घुमा फिरा के they can ask you many questions, right? But the question will be quite simple, right, student? Okay, now this we use
when the solute is added very small amount, that is when the solution is diluted, right? This formula is used when the solution is diluted or very dilute, student, right? Solution is very dilute, वो time पे हम use करते हैं. But question comes, if the solution is not that much of dilute, अगर solution उतना dilute नहीं है, फिर क्या करें, right? Let's understand then how to solve that. Okay, let's see. Let me adjust first, and otherwise we'll miss it out. Okay, student. Now we have just proved. Should I write here visible? Yes. P naught A minus PA upon P naught A. XB, that was equal to XB, and XB was equal to what? NB upon NA plus NB, right, student? Okay, this is what we have proved this. When the solution is dilute, we remove this. But अगर solution dilute नहीं है, if solution is not very dilute, right, in that case, how we proceed, let's understand. Okay, now thoda sa, see, we can directly write, I mean, you put the values of NB and you put the values of NA, just add this and then solve it. आप directly भी solve कर सकते हो, ठीक है? But suppose मैं उसको थोड़ा simplify करता, I try to simplify it. So how can I simplify it? Let's understand. What I'm going to do is I invert this. मैं इसको invert कर देता हूँ, ठीक है? तो अगर मैं इसको invert करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? P naught A upon P naught A minus PA. If I invert here, ये भी invert हो जाएगा. NA plus NB upon NB, right? Or inverted. Now I can further write P naught A minus PA. Can I write like this? NA upon NB plus NB upon NB. Can I write like this? Yes, I can write like this. Okay, now this NB and this NB is going to cancel, right? It will become 1. Okay, so I can write like this: P naught A upon P naught A minus P is equal to NA upon NB plus 1, right? If plus 1 इस साइड में आएगा वो -1 हो जाएगा. Okay, so P naught A upon P naught A minus PA minus 1 is equal to NA upon NB, right? Clear? Further solving this, how I can write? Let's see. P naught A minus. Okay, what I am doing is, student, मैं इसको इसका LCM निकाल, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट? what I'm doing is, okay, so ये हो जाएगा P naught A minus P naught A plus PA, because bracket open होगा, right, upon P naught A minus PA, that is equal to NA upon NB. Can I write like this? So this P naught A minus P naught A will get cancelled. So what will be left? PA upon P naught A minus PA, that is equal to NA upon NB. Clear? Now what I do now, I again invert this. जैसे पहले हमने इन्वर्ट किया था ना स्टार्टिंग में, वैसे हम इसको फिर से इन्वर्ट कर देते हैं. सो इट विल बिकम P naught A minus PA upon PA, that is equal to NA upon NB, right?
But when we use this, when solution is not dilute. Clear? Now student, let's see the difference. Okay, here this one, इसी को simplified form है, यहाँ भी आप simplify कर सकते हो, ठीक है. Let's see the difference student. Here this will, sorry, I've inverted here, I have not inverted over here, so this will become NB and this will become Na, right? हमने यहाँ invert किया, यहाँ नहीं किया, so ये NB upon Na हो जाएगा. Please note this, right? It is also inverted. Now if you compare this formula, NB upon Na, NB upon Na, clear? P naught A minus PA, P naught A PA. Here it's P naught A, but here is PA. You understood the difference, student? Right? मतलब अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा आया कि सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. ओके, और अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि सोल्यूशन इज नॉट, मतलब सोल्यूशन नॉट डाइल्यूट, राइट, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो टाइम पे फॉर्मूला इज ऑलमोस्ट सेम. सिर्फ डिफरेंस ये है कि इंस्टेड ऑफ P not A हम लिखेंगे P. That's the only difference. And many times the question comes when you don't know how much amount of solute is added. Suppose the question comes कि tell me how much amount of solute is added, right? तो in that case you're not aware कि solution dilute होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, right? I rewrite the formula so that ये confusion थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है. P naught A minus PA upon PA is equal to NB upon NA. Right student? So the difference lies only over here. अगर solution dilute है तो आप P naught A यहाँ डिवाइड करोगे, डिवाइड बाय P naught A करोगे, और अगर solution dilute नहीं है तो आप PA लिखोगे. Simple? Clear? So here we complete the theoretical part of relative lowering of vapor pressure, right student? Okay, now in the next lecture I'll be doing some numerical based on this, right? Relative lowering of vapor pressure pe I'll be solving numerical, right? And after that we'll start with the under colligative property. For today stop over here. Thank you.